Act 1, Scene 2 begins when Duncan, Malcolm, Donovan, Lennox, and attendants, they are watching a captain. So this scene will help us to know about what was going on in the battlefield. How has Macbeth been a hero? How he has fought with the battle against the enemy? How he has fought in the battle against the enemy? So in this scene, we will be informed about the bravery of Macbeth without meeting Macbeth. It seems to me that Shakespeare is trying to create a heroic image in the mind of the audience before we meet Macbeth, the hero, in Act 1, Scene 3, that is in the next scene. So in this scene, Macbeth is not there, but the whole scene is about Macbeth. It is about his greatness. So let us do it line by line. So Act 1, Scene 2, this scene is near where the battle was going on. So we have the King of Scotland, Duncan, his eldest son, Malcolm, his younger son, Donovan, and there are many other important people like Lennox and attendants and a warrior fighter who has come bleeding. तो ये सीन शुरू होता है, स्कॉटलैंड के किंग है, उनके बेटे मैल्कम और उनका छोटा बेटा डोनल्बन है, लेनॉक्स है, अटेंडेंस है और एक ऑफिसर है जो वॉर से आ रहा है और वहां का खबर लेके आ रहा है. सो इफ यू हैव द बुक, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू open your book and follow it line by line, since I'm teaching it line by line. So the scene begins, and King of Scotland, Duncan, is looking at that sergeant and he says, "What man is that? ये कौन सा इंसान है?" He can report as seen by his condition. इसका हालत देख के ऐसा लग रहा है कि he can report about the battlefield. खून से लथपथ है, war से आ रहा है, so ऐसा लग रहा है कि he can report about what has been happening in the battlefield. He can report the newest state. Now, Duncan, the King of Scotland, is saying, इस आदमी को देख के लग रहा है, it seems by his plight, seen मतलब appear by his plight, मैंने condition, कि he can tell us about the revolt, about the fight of the newest state, मतलब जैसे स्कोर होता है लेटेस्ट क्रिकेट में. सो डंकन इज सेइंग कि इसको देख के लग रहा है कि ये वॉर के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट बता सकता है, क्योंकि ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी, इसके बॉडी से खून निकल रहा है, तो ये वॉर का लेटेस्ट बात बता सकता है. सो डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, इज लुकिंग एट द वॉरियर, कैप्टन, सर्जेंट, ऑफिसर, एंड ही इज सेइंग, ये कौन सा इंसान है, इतना इसके चेहरे पे खून लगा हुआ है. Then Duncan says, he can report, हमको लग रहा है ये बता सकता है about the condition of the battlefield, as seems by his condition, कि ये latest हालत बता सकता है. Duncan's eldest son Malcolm is saying, this is the surgeon. Duncan को उनके बेटे Malcolm बता रहे हैं कि this is the surgeon, यही ऑफिसर है, who like a good and hardy brave soldier fought against my captivity. सो डंकन को बताया जा रहा है, डंकन के बेटे मैल्कम बता रहे हैं कि सर यही वो इंसान है, यही वो बहादुर ऑफिसर है जो बहुत बहादुरी से लड़ा और हमको एक प्रिजनर बनने से बचा लिया. सो मैल्कम इज सेइंग टू दैट ऑफिसर, हेल फ्रेंड, वेलकम फ्रेंड, और अब बताइए मेरे पापा डंकन को, किंग ऑफ स्कॉटलैंड को, कि व्हाट वाज द कंडीशन. सो द सीन बिगिंस. डंकन लुक्स एट द ऑफिसर who is full of blood and he says कि इसकी हालत से लग रहा है कि वॉर से आ रहा है और he can report about the war. So his elder son Malcolm is saying कि सर यही वो ऑफिसर है जो बहुत बहादुरी से लड़ा और इसके वजह से मैं बच गया, नहीं तो Malcolm would have been a prisoner, नहीं तो Malcolm फंस जाता, he would be imprisoned by the enemy. So he is saying to the officer, welcome officer, say to the king the knowledge of the broil as you did leave it. He's saying कि किंग को बताओ द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल, ब्रॉयल मैंने फाइट, एज यू डिड लीव इट, मैंने तुम जहां तक वॉर में थे वहां तक किंग डंकन को बता दो. दिस इज द सर्जेंट. मैल्कम इज सेइंग टू हिज फादर, यही वो ऑफिसर है, हु लाइक ए गुड एंड टार्डी ब्रेव सोल्जर फॉट अगेंस्ट माई कैप्टिविटी, यही वो सोल्जर है जो हमको कैप्टिव होने से बचा लिया. सो इज सेइंग, हेल गुड फ्रेंड, वेलकम गुड फ्रेंड, अच्छे मेरे दोस्त, तुमने मेरा जान बचाया, वेलकम. And say to the king, डंकन को बताओ क्या, the knowledge of the broil,
द नॉलेज ऑफ द फाइट एज यू डिड लीव इट, जहां तक तुम वॉर छोड़ के आए थे किंग डंकन को वहां तक के बारे में बताओ. So this soldier who is coming from the battlefield, this soldier who is bleeding, this soldier is gasping for breath, उसके सांस रुक रहे हैं, but somehow he has to narrate what has happened to the king, because in those days there was no phone, there was no satellite system that you can monitor what was going on. So you have to listen to people to know what has been happening in the battlefield. So यहाँ सर्जेंट डंकन को बता रहा है डाउटफुल इट्स टू, मतलब जब वॉर हो रहा था तो डाउटफुल था. क्या डाउटफुल था? ये कहना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा. सो सर्जेंट इज सेइंग व्हेन द बैटल वाज गोइंग ऑन इन द बिगिनिंग इट वाज डाउटफुल टू कम टू द कंक्लूजन कि कौन विनर होगा कौन लूजर होगा. So Sergeant Penny is reporting about the battlefield. The very first sentence he is saying is that the decision of the battlefield, who will win and who will lose, was doubtful. As two swimmers who cling together to choke their heart. अब दो स्विमर में रेस हो रहा है एंड पॉइंट तक पहुंचने तक. If one swimmer will catch hold of the other swimmer, none of them can move ahead and none of them can become winner. अगर दो स्विमर में रेस हो रहा है, दोनों एक दूसरे को पकड़ ले, तो समझ में नहीं आएगा कि कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा तो कोई जीतेगा कहां से. So Macbeth and his enemies are compared to two swimmers. It's a simile. Macbeth और दुश्मन लोग में ऐसे वॉर हो रहा था जैसे दो स्विमर एक दूसरे को पकड़ ले एंड दे चोक देयर आर्ट, मतलब दे डिस्ट्रॉय देयर qualities. If one swimmer will catch hold of another swimmer, both of them will destroy each other's quality, each other skill of swimming. Similarly, if two soldiers of equal talent fight, both of them destroy each other's capability, as a result of which nobody wins and the result is zero. So Macbeth and his enemies are compared to two swimmers who are fighting against each other, as a result of which both of them are nullifying the power of one another. दोनों एक दूसरे के पावर को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं. तो ये कहना मुश्किल है कौन जीतेगा और कौन हारेगा. Merciful MacDonald. So we come to know about the first enemy of King Duncan. So the first enemy is used with an adjective. He is merciless. That means he was very cruel to Macbeth and his soldiers. Merciless MacDonald, worthy to be called rebel. मतलब he is a very cruel man and he fits to be called as an enemy. The multiplying villainies of nature to swamp upon him. जैसे कीड़ा लगता है फिर इतना सारा कीड़ा लग जाता है, वैसे उसके अंदर विलेनी बढ़ रहा था. जैसे जैसे उसका विलेनी बढ़ रहा था, he was bringing more soldiers. The multiplying villainies of nature, उसके नेचर का evil quality मैकडोनल्ड का बढ़ रहा था. From the western islands of Kans and Galloles is supplied. So he, उसके दुश्मनी उसके evil quality बढ़ रहे थे, तो हॉर्स सोल्जर्स और फुट सोल्जर्स जो है वेस्टर्न साइड से और सप्लाई होने लगा. एंड मैकडोनल्ड who is fit to be an enemy, his evil nature was growing and दोनों साइड से दुश्मन लोग आने लगे. पहले वेस्टर्न साइड से कॉन्स एंड गैलोलस एंड हॉल सोल्जर एंड फुट सोल्जर्स लोग आने लगे. एंड फॉर्च्यून ऑन हिज डैम कॉरल स्माइलिंग शोड लाइक ए रेबल्स होर. और किस्मत हंस रही थी. किस्मत, luck was smiling like a prostitute, like a sex worker. So fortune was smiling on the enemy like a damn quarrel. And prostitute, they don't actually, they're not so loyal compared to other relationship of male and female. So here, किस्मत उन लोगों पे हंस रहा था जैसे एक prostitute हंसती है. So this is a metaphor. The destiny, the luck was smiling at them like a rebel's whore. Like rebel means enemy, whore means prostitute. So किस्मत उन लोग पे हंस रहा था, किस्मत मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये मुस्कुराहट थोड़े देर की थी. मुस्कुराहट prostitute के स्माइल की तरह होती है. It is not sincere, it is not genuine, and it is temporary. So किस्मत दुश्मन लोग के जीतने पे जब एनिमीज लोग आ रहे थे, guns and gallows glasses were coming from the western side. So for time being, it appeared as if the luck seems to support the enemies, and luck was smiling. But the smile was not authentic. But the smile was not genuine. वो हंसी रियल नहीं था, जेन्युइन नहीं था. कुछ देर के लिए तो ऐसा लग रहा था किस्मत उनका हो चुका है, लेकिन किस्मत उनका नहीं हुआ था. किस्मत सिर्फ मुस्कुरा रहा था और थे एकदम कुछ मिनटों का मुस्कान था, जैसे
prostitute का smile होता है, just to trap the customer. But all is too weak. किस्मत हंसे कान आए, गैलो ग्लासेस लेके आए, और सोल्जर आए, फूड सोल्जर आए, दुश्मन का एनिमी बढ़ता रहे, बट ऑल इज टू वीक. किसके लिए? ब्रेव. So this is the first adjective in this play used for Macbeth. He is a brave person. Well, he deserves that name. It is not that people are flattering him. Macbeth really fought very well. MacDonald, whose evil quality was increasing, who was bringing cans and gallow glasses from the western side of the fight, who was winning, and Macbeth. लेकिन ये सब कोई कितना जीते कितना हारे, whether MacDonald brings more soldiers, less soldiers, cons and gallow glasses, nothing happens because opposite of MacDonald was Macbeth. Well, he deserves that name. उसको ये title मिलना भी चाहिए क्या? Brave Macbeth. He was disdaining fortune. Luck was smiling on them, but he did not care for luck. किस्मत उनके साथ था, but इसने किस्मत को भी indifferently treat किया. And he took out his brandy steel. It's almost like South Indian hero. So Macbeth ने अपना तलवार निकाला and steel, which smoked a bloody execution, जिससे भाप निकल रहा था लोगों को मारने के बाद जो बॉडी का भाप निकलता है. So Macbeth के तलवार से after killing so many people भाप निकल रहा था. And this adjective after brave, this is the second one. Macbeth is called valor's minion. Valor is a goddess of bravery. So Macbeth, minion means favorite person. So Macbeth, like a favorite person to the goddess of bravery, carved his passage. चारों तरफ दुश्मन थे, लेकिन Macbeth ने अपना ठीक रास्ता बना लिया. With his brandy steel killing lots of people, like the favorite person of goddess of bravery, Macbeth made his passage till he faced his enemy. MacDonald and Macbeth, he faced one another. He did not shake hand. He did not say hi, hello, farewell. Till he unseamed him from knave till chap. And Macbeth ने अपना तलवार निकाला, उसने hi, hello नहीं बोला. He did not shake hand, but he unseamed him, cut him from knave till chap. यहाँ तक उसको मार के पूरा यहाँ से काट दिया, साउथ इंडियन हीरो की तरह. And fixed his head upon the battlefield. उसका मुंडी से काट के निकाला और दीवार में जहाँ था वहाँ गाड़ दिया ताकि उसके सारे फॉलोअर्स डर जाए. So this probably was a normal tactic. So Macbeth made his passage like a valor's minion, the favorite person of goddess bravery. And he went and defeated his enemy. और ऐसे वैसे enemy नहीं. He cut from knave till chap. उसका मुंडी निकाला और दीवार पे वहां रख दिया ताकि सब दुश्मन डर जाए. Duncan is saying, valiant cousin. This is the third adjective used for Macbeth. Duncan is saying, वाह, मेरा cousin तो बहुत बहादुर है. Worthy gentleman. ये बहुत अच्छा. मेरा cousin Duncan and Macbeth, their cousin. The saying, my cousin Macbeth is really very brave. Ah, that's all. Now the officer is narrating what happened in the battlefield. He's saying, as when the sun gains his reflection, shipwrecking storm and dire thunder break, so from the spring when comfort seems to come, discomfort can. So Sergeant is saying, is giving a comparison कि कभी कभी ऐसा होता है जिधर से सन राइज होता है उधर ही से कभी स्ट्रॉम आने लगता है, थंडर लाइटनिंग आने लगता है, और जहां से स्प्रिंग आना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव आना चाहिए, वहीं से नेगेटिव आने लगा. मतलब हियर सर्जेंट इज गिविंग, ट्राइंग टू से कि जिस साइड से हम लोग जीत रहे थे उसी साइड से हारने लगे. To prove this point, he is giving one simile. One is sometimes from the rising side, from where the sun rises, we get thunder, lightning, storm, तूफान आने लगता है, और कभी कभी जहां से स्प्रिंग आना चाहिए, अच्छी चीज आना चाहिए, वहां से डिस्कम्फर्ट आने लगता है. सो इज सेइंग, किंग स्कॉटलैंड ऑफ डंकन, प्लीज मेरे बात का ध्यान दीजिए. नो सूनर जस्टिस हैड विद वैलर आर्म कंपेल द स्किपिंग कर्न्स टू टच द हिल. सो जस्टिस इज मैकबेथ इज सेड एज जस्टिस. सो विद हिज वैलर आर्म, मतलब आर्मर पहन के वैलर वाला, ही फोर्स, कंपेल मैंने फोर्स द स्किपिंग कर्न्स मींस सोल्जर्स टू टच द हिल. से सोल्जर्स को किंग को बताया जा रहा. सर्जेंट बोल रहे हैं कि मैकबेथ ने, he's called as justice because he was representing justice. So justice,
मैंने मैकबेथ इज फाइटिंग फॉर जस्टिस विद वैलर आर्म, मैंने आर्मर, बहादुरी का आर्मर पहन के, ही फोर्स्ड द स्कीपिंग सोल्जर्स टू ट्रस्ट द हिल्स, उनको उल्टे पांव वापस भेज दिया. बट the Norwegian lord, the king of Norway, surveying advantage, means taking advantage, he with furbished arm, he started supplying more arm, more men. जिस साइड से मैकबेथ जीत रहा था, जैसे ही मैकबेथ ने सब सोल्जर्स को फोर्स देम टू ट्रस्ट द हिल, उनको उल्टे पांव भेजा, वैसे ही किंग ऑफ नॉर्वे took this advantage and he started sending more soldiers. उसी साइड से किंग ऑफ नॉर्वे ने और सोल्जर भेजना शुरू कर दिया. एंड there began a fresh assault. और फिर से वॉर चालू हो गया. So Duncan is asking, dismayed not my cousin Macbeth and his another soldier Banquo. So Duncan ने पूछा, जब फिर से नॉर्वियन लॉर्ड ने सोल्जर भेजा तो मैकबेथ और बैंको डरे नहीं? मैकबेथ बैंको इतना सोल्जर आ गया तो वो लोग डिसमेड नहीं हुए, वो लोग थोड़ा डिसहार्टेंड नहीं हुए? सर्जेंट इज सेइंग, हाँ वो लोग डर गए. जैसे ईगल स्पैरो से डर जाता है और जैसे लायन रैबिट से डर जाता है, वैसे वो लोग डर गए. He is in a funny way, tongue in cheek, is saying that Macbeth was afraid of the enemy. Like eagle is afraid of sparrow and lion is afraid of hare, rabbit. So Macbeth was not afraid. So he's saying in a sarcastic tone, in a funny way, कि जैसे ईगल कभी स्पैरो से थोड़ी डरता है और लायन कभी रैबिट से थोड़ी डरता है, वैसे मैकबेथ भी दुश्मन से नहीं डरा. As if I say सूट मैंने ट्रूली, अगर हम सच बोले तो I must report they were cannon overcharged with double crack. ये बोल रहा हम सच बोले तो मैकबेथ लोग बैंको लोग के अंदर डबल चार्ज करके डबल हो गया और वो रीडबल होके फिर से डबल हो गया when he attacked on the enemy. It is almost like South Indian movie in a traditional description. It's almost like RRR or Bahubali. So Macbeth का पावर डबल हुआ, कैनन ओवरचार्ज विद डबल क्रैक, मतलब हर पावर में डबल पावर हो गया, फिर वो डबल हुआ, फिर वो रीडबल होके स्ट्रोक्ड अपॉन द फोर. एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट द एनिमी, देयर पावर डबल एंड देन रीडबल्ड एंड देन अगेन डबल्ड व्हेन मैकबेथ वाज हिटिंग द एनिमी. इन शॉर्ट, विदाउट मेकिंग इट लाइक साउथ इंडियन मूवी, मैकबेथ ने बहुत बहादुरी से लड़ा और वो डरा नहीं और अपने पावर को डबल 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 करके एनिमी पे अटैक किए थे. Except they mean to bath in reeking wound or memorize another Golgotha, I don't know. So this captain is saying कि ऐसा लग रहा था they were trying to bath in reeking wounds, मतलब चारों तरफ खून का फवारा निकल रहा था. It was all flourish of shower of blood all over and they were bathing in blood, or they were trying to memorize or create another Golgotha. Golgotha was a place where Christ was crucified and it's a place of skull. क्राइस्ट जहाँ क्रूसिफाई हुए थे तो दूर में जब लोग उस जमाने में मर जाते थे तो एक वहाँ हड्डी जमा किया जाता था. इट वाज अ प्लेस ऑफ स्कल. सो मैकबेथ वाज आइदर ट्राइंग टू बाथ इन रीकिंग वूंड, मतलब चारों तरफ से खून निकल रहा था, लोगों को मार मार के चारों तरफ से जो खून निकल रहा था, या तो मैकबेथ उसमें नहाना चाह रहा था या मैकबेथ वो स्कल वाला प्लेस क्रिएट करना चाहता था जहां सिर्फ डेड बॉडी होता है. सो इतने में ना मैं ये जो कैप्टन था ये बोला, आई कांट टेल आई एम फेंट, माय गैसेस क्राई फॉर हेल्प. इसलिए अब हम वो बोल नहीं पाए, अब हम बेहोश हो जा. तो बेहोश बोल के बेहोश होता है बिकॉज इससे स्टेज प्रॉपर्टी, अदरवाइज हाउ ऑडियंस नो कि क्यों गिर रहा है. सो ये गिरने से पहले बोल रहा है माय गैसेस क्राई फॉर हेल्प, मतलब गैसेस मींस ब्रेथ. Gases cry for help, मतलब मेरे सांस रुक रहे, it needs some help. Duncan is saying to his followers, first he's saying to the soldier जो जिसने ये पूरा कहानी बताया, saying your words become as the wound, they both smack, means taste of honor. He's saying तुम्हारे wound भी असली है और तुम्हारी बात भी असली है, दोनों इस बात का प्रूव है कि you are honorable and truthful. So Duncan is saying that तुम्हारे खून जितने जेन्युइन है उतना ही तुम्हारा वर्ड जेन्युइन है. दोनों ये बात का स्मैक है, टेस्ट है, प्रूव है कि यू आर ऑनरेबल एंड वट एवर यू हैव रिपोर्टेड इज ट्रू एंड ऑनेस्ट. गो गेट हिम, सर्जन. तो डंकन इज सेइंग, सर्जन बुला, डॉक्टर बुला, इसको भेजो भेजो. सो द सर्जन अटेंडेड, मतलब उसको लोग उठा उठा के स्ट्रेचर पे ले गए. इतने में डंकन इज सेइंग, हु कम्स हियर, कौन है ये? एंटर रॉस, ही इज आल्सो वन ऑफ द किंग्स फॉलोअर.
Malcolm is saying, sir, he is a Thane of Ross. मतलब ये Ross एक जगह है, वहां के ये head है, ये Thane of Ross है. So Lennox is saying, what a haste look through his eyes. Lennox is saying, इसके चेहरे पे बहुत हड़बड़ी है. He looks as if he's going to say something very weird, strange. आप war से आ रहे हैं, तो चेहरा तो अजीब ही होगा. So Malcolm is saying he is a Thane of Ross. Lennox is saying कि इसके चेहरे से लग रहा है कि he has a lot of haste, hurry in him. बहुत हड़बड़ी में है, इसके आंखों में दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत अजीबोगरीब चीज बोलने जा रहा है. So Ross comes and says, God save the king. वो लोग पहले आते थे तो बोलते थे. This was the way to meet the king. God save the king. Duncan is saying, where are you coming from, Worthington? Duncan is saying, तुम कहाँ से आ रहे हो, details बताओ. So Ross is saying, I'm coming from Fife. It's a place in Scotland. So he's saying, great king, I'm coming from a place called Fife, where the Norwegian banner flaut the sky. जहाँ पे king of Norway का banner मने flag, it was moving in the wind. Flouting मतलब it was mocking the people. Scotland में नॉर्वे का झंडा लहरा था, and whenever people को common लोग चुपचाप डर के बैठे थे. Norway himself, king of Norway खुद, with lots of people, assisted by the most disloyal traitor, the Thane of Cawdor. So Thane of Cawdor was a follower of King Duncan, but he has gone and joined the enemy. So he is saying King of Norway खुद और हम लोग के कंट्री का जो ट्रेटर है, धोखेबाज है, Thane of Cawdor, वो लोग दोनों मिलके they started a dismal conflict. They started a very dangerous fight. Till Bellona's bridegroom. So Bellona is a goddess of war, and bridegroom mane दूल्हा. Macbeth is called as Bellona's bridegroom. So King of Norway लड़ रहे थे, अपने साथ Thane of Cawdor को भी ले आए थे, लेकिन मैकबेथ जो खुद गॉडेस ऑफ वॉर का हस्बैंड है, मतलब वन, इसको इसलिए बोला गया बिकॉज ही कैन फाइट वेरी वेल. Okay, so Macbeth, like Bellona's bridegroom, lapped in proof, means fully wearing armor, confronted them with self-comparison, means उनका हर एक ईंट का जवाब का पत्थर से दिया, हर एक वॉर का जवाब he fought very bravely. He confronted them, fought with self-comparison, मतलब with equal talent. पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, मैंने उनके पॉइंट के अगेंस्ट इसका एक पॉइंट था, उनके आर्म के अगेंस्ट इनका एक आर्म था. सो किंग ऑफ नॉर्वे अलोंग विथ थेन ऑफ कॉडर fought against Macbeth, but Macbeth is Bellona's bridegroom. He himself is the husband of goddess of war, and when you are already the goddess of war's husband, how can you be defeated? So Macbeth fought against them, confronted them with self-comparison. He fought them with equal kind of. उनने एक example set किया. He killed some people and set an example. So they had a point of killing. He had another point of killing. They had an arm. He had another arm. Curbing the lavish spirit. उनका जो excitement था, जो बढ़ रहा था war का, Macbeth curbed them, stopped them. And to conclude, sir, the victory fell on us. So Ross is saying, sir, बहुत war हुआ. Macbeth Bellona bridegroom के तरह उनके spirit को दबा दिया. और सर बात ये है कि हम लोग जीत गए. The victory fell on us. Scotland जीत गया against King of Norway, MacDonald and King Thane of Cawdor, Duncan. Duncan is great happiness. Very good. Duncan is happy because his enemies are killed. Ross is saying that now Sweno, the King of Norway का नाम है ये, craves composition. So King of Norway ने अपना हार मान लिया, and he was trying to have a negotiation, a settlement. मतलब जो हार जाते हैं तो कुछ ले दे के नक्की कर लेते हैं. That is called craving composition, means ले दे के नक्की करना. So King of Norway, he was trying to have a kind of negotiation. We would not deny him the burial of his men. So Scotland, Macbeth ने बोला कि हम लोग आपके जितने भी सर्वेंट हैं उनको हम लोग जलाने नहीं देंगे. Till you disburse, till you give to us at some call in some amount of money, $10,000 for the use of the general treasury of King Duncan. So King of Norway जब देखा हारने लगा तो बोला ठीक है, अब तो हार ही रहे, सो कुछ ले दे के नक्की कर लेते हैं. But they did not allow the burial of the men. उन्होंने soldiers, उस जमाने में soldiers लोग का burial करना was a very important thing, because if the soldiers are not given burial, then people in Norway will probably kill the king himself. So King of Norway was trying to make a negotiation, and the negotiation was that
till he gives them $10,000. They will not allow the soldiers of Norway who are dead to have a funeral ceremony. So Macbeth बहादुरी से तो लड़ा ही लड़ा, and he also bought lots of uh, dollar money for the general treasury. Duncan, no more the Thane of Cawdor shall deceive our bosom interest. Go and so he's saying, चलो अब Thane of Cawdor अब हम लोगों को धोखा नहीं दे पाएगा. Go pronounce his present death. He's saying, जाओ Thane of Cawdor के लिए डेथ सेरेमनी का डेथ का परवाना जारी. Go and give him, it's my order कि जाओ Thane of Cawdor को मार दो, और उसका टाइटल जो है वो मैकबेथ को दे दो, मतलब वो पोजीशन जो है वो मैकबेथ को दे दो. सो डंकन इज वेरी हैप्पी विथ मैकबेथ एंड ही सेज कि अब कभी भी थेन ऑफ कॉर्डर हमको धोखा नहीं दे पाएगा. नॉट रियलाइजिंग द ड्रामेटिक आयरनी कि अगला जो थेन ऑफ कॉर्डर होगा वो क्या होगा. सो दिस हैज ए fallback line, because if you read the whole plan, then if you listen to this line, you will realize that Duncan is saying this for present Thane of Cawdor, and he's saying कि अब present Thane of Cawdor तो धोखा नहीं दे पाएगा, अब next Thane of Cawdor बहुत अच्छा होगा. Not realizing that the next Thane of Cawdor probably can be worse than the present one. So Duncan बोल रहा है, no more the Thane of Cawdor shall deceive my bosom interest, my personal trust. Duncan बोल रहा है अब हम बहुत खुश हैं कि अब Thane of Cawdor हमको धोखा नहीं दे पाएगा. And he's saying to Sarun, go pronounce this present death, अनाउंस कर दो उसका डेथ, और ये टाइटल ले आके दे दो मैकबेथ को, मतलब ये पोजीशन, ये पावर, ये जो नेक्स्ट थेन ऑफ कॉर्डर मैकबेथ बनेगा, ये अनाउंस कर. रॉस इज सेइंग यस सर, हम लोग जा रहे हैं. थेन ऑफ कॉर्डर को ऑर्डर दे रहे हैं कि सोल्जर्स विल किल थेन ऑफ कॉर्डर, और उसका हम लोग पोजीशन मैकबेथ को दे देंगे, आपके कजिन मैकबेथ को मिलेगा. Duncan is saying what he has lost, novel Macbeth has won. It has many meaning, but in short, I'll end it up quickly. Duncan is saying कि Thane of Cawdor का टाइटल एक जन ने खोया है, वो है present Thane of Cawdor, और अब Macbeth will become the next Thane of Cawdor. So Duncan is saying कि Thane of Cawdor ने जो पोजीशन खोया Macbeth को वो मिलेगा. एक मतलब ये. दूसरा मतलब ये है the treachery that was in the previous Thane of Cawdor will now be in the next Thane of Cawdor, Macbeth. So here it can have multiple meanings, two possible meanings right now. In short is Duncan is saying कि previous Thane of Cawdor ने पोजीशन जो हराया, अब नए Thane of Cawdor मैंने मैकबेथ को ये पोजीशन मिलेगा. दूसरा मतलब ये है कि वो Thane of Cawdor का एक धोखा था, उसने धोखा दे दिया. अब नेक्स्ट Thane of Cawdor को जब ये पोजीशन मिलेगा, of course Duncan does not realize that this might be the meaning. But once you see the whole play, this is one possible meaning, that what he has lost, noble Macbeth has won. मतलब उसने धोखा को खोया है, और मैकबेथ अब जब Thane of Cawdor बन जाएगा, उसके अंदर ये धोखा का क्वालिटी आ जाएगा. So this is Act 1, Scene 2, line by line. So if you have found this video of any meaning, of any use, so please do share with your friends, like it and comment on it. And if you have any question, ask us in the comment box. Thank you for watching the video.